We have to do this Good question. evening, ma'am. Good evening. Yes, someone was asking something. Okay. We are going to wait for a while because बहुत लोगों ने मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, ठीक है? And still people are joining, so we have to wait for 2-3 minutes initially to start up the class. Okay, those who have joined now, beta, you have this question on your screen. You can start doing this. Okay. So एक बार बस let us revise what's the formula for area of trapezium. Who will tell me? Just I need the formula. Answers are coming. That's good. Madhav is the first one to have the correct answer. I want a I want the formula for trapezium area. Someone please raise your hand and tell me. A plus B divided by 2H. Yeah. Okay, it's not breadth into height. Okay, it's like half into height. Yes, yes, yes. And sum of parallel sides. Okay. Okay. It is sum of parallel sides divided by 2 into H. Yeah, very good. I have written down the formula on screen as well. And now we are done with the formula. You straight away jump to the answers. Many of you have already answered. Madhav is the first one. Pratham is correct. Divyansh is correct. Good evening, Avni. I'm just waiting for the new participants कि आप लोग आंसर करेंगे. उसके बाद we are going to the next question. Yes, Shreyanshu, do you want to ask me something? Yes, ma'am. Actually, there is no, ma'am, the parallel sides are not mentioned. Okay, the parallel sides are not mentioned. Okay, I'm mentioning this. This is the parallel side. Actually, वो थोड़ा सा visually अब देखो opposite sides है, trapezium है, तो unequal sides जो है उसके अलावा the remaining sides will be parallel here. I'm just waiting for ना बच्चे बहुत थोड़ा सा लेट 2-3 मिनट लेट ज्वाइन किया था इसलिए I'm waiting. So take your time and give your answer. Okay, so the first one is a very easy one. यहाँ पे देखो we are already provided. Okay, one. Sorry, it's not correct. So what I was saying कि बेटा we are already provided
there are two equal sides we can see. This is 12, so this is also 12. Trapezium mein we are provided with the height, that's fine, that's 12. But what about the parallel side? So beta, what we will do, we are going to draw a perpendicular from this vertex like this. Okay, so now this is going to be 12. Now this is a what? This is a right angle triangle. So beta, this is 12 and this is 13. So the other side is going to be, Shreyanshu, you are correct. This is going to be 5. Now कैसे 5 आ रहा है? We are applying Pythagoras theorem or we can apply the Pythagoras triplets जिनको learn है already. So this is 5. अब देखो ये वाली जो length है, this is going to copy down here. This is going to be 12. So 12 and 5, that gives you 17. And the other parallel side is 12 here. We are adding this up half and multiplied by the height. The height is 12 here. Once you calculate this, you are going to get 174. Okay. So this one was a very easy one. Iske baad we are going 1, 2, 3. We are going doing a trapezium only. So यहाँ पे we are again having a trapezium. Okay. When we don't have a figure बनाना बहुत जरूरी है. तो trapezium में I'm making the figure for you. यहाँ पे we are having two parallel sides. One is 20 and the other one is 40. And non-parallel sides both are equal. Okay, very good. Let it be equal. So if it's like this, 20 and 40, and now both are equal, it's 26 and 26 here. So we have to find out the, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? We have to find out the area. Okay. Okay, I'm getting answers very fast. Okay, very good. We have the first answer from Madhav. Very good. Reply. Avni is also correct. Manol is also correct. Shreyanshu is correct. Okay. Shreyanshu, your second one is correct. You have given two answers. Your second answer. Ma'am, the first one, ma'am, actually, while it was in the Pythagorean triplet. Okay. Fine.
Okay, those who are not giving this answer, उनके लिए एक hint है. Basically, trapezium का area निकालने के लिए what we do, we take one vertex and we are drawing parallel side corresponding to this parallel side like this. Okay. And with the help of this side, now this is also going to become 26 here. With the help of this side, we have to find out this perpendicular height. Okay. Okay. Then let's see how we are going to do this. We are having this two sides. बेटा ये triangle बन गया ना हमारा. अब देखो ये 20 है, so this is also going to be 20 from here to here. Sorry, 1 second. From here to here, this much is going to be 20. And we had this entire length as 40, so the remaining will also be 20 here. Now coming to this triangle, we can see this is basically what kind of triangle. This is a isosceles triangle here, right? Now this isosceles triangle, we know the property कि isosceles triangle में ये दो sides equal होते हैं और ये जो perpendicular होता है ये base को equal parts में divide करता है. So basically ये कितना हो गया मेरा 10 में divide हुआ. Now this is a right angle triangle here with 26, 10. Okay, तो अब बताओ ये वाला साइड जो है वो कितना आ जाएगा. This is going to become as 24, right? कैसे किया हमने, वही Pythagoras triplet से किया. So what's the height of this trapezium? Ma'am, It's can you 24 explain it here. again? Yes, dear, I'm going to explain once again. शुरू से देख लेते हैं what we are doing. Now coming to this part, this entire length was 20. हमने क्या किया, पहले यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया इस साइड के बराबर. तो बेटा ये 26 है तो ये भी 26 होगा, ठीक है. Yes, ma'am. और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 20 एंड रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 20. 20. Yeah. Now I am interested for this triangle that is formed here. ये एक triangle form हो रहा है यहाँ पे. I am picking this triangle up. Why I am picking this triangle up? Because we need the height of this triangle. क्योंकि यही height मेरी trapezium की भी height है. Okay. So once I pick this triangle, now we can see this is an isosceles triangle with 26 here, right? Isosceles triangle की property में we know it divides the base into equal halves. तो basically ये 26 हो गया and this is 10. अब देखो मैंने यहाँ से right angle triangle pick किया है, okay? अभी right angle triangle में we can simply apply the Pythagorean triplet. ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितना आएगा हमारा 24. अब ये कैसे आया? If you don't know this, then I will tell you, you should learn by heart the Pythagoras triplets. और आपको Pythagoras triplet में क्या है, 26 square should be equal to, ये जो भी साइड थी अगर x थी तो it's x square plus 10 square, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो x will come as 24 here. ठीक है यहाँ तक? टेल मी, यहाँ तक ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Okay. So once we got this height, this is the height, right? अब height के बाद तो और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास. It's half into height into sum of parallel sides. अब parallel sides पे आ जाते हैं. One is 20 and the other side was what? 40 here. So it's 20 plus 40 and that's giving you 60. So it's half. आप कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे हाफ 24 into 60 हो गया, तो ये कैलकुलेट करके it will come as 720. क्लियर है? देखो ट्रेपेजियम में जो है ना, ट्रेपेजियम whenever I'm getting a trapezium, we should keep this in mind. हाइट जो है वो डिटरमाइन करेगा मेरा एरिया को, और कोई उपाय नहीं है. We don't have any other options. Just wait a minute. Someone is waiting. Okay. So we have to anyhow
find out this height. अब ये height कहाँ से आएगा बेटा? We always get this height from this triangle. ठीक है, अब इस ट्राइंगल से हाइट निकालने के दो तरीके हैं. फर्स्ट तरीका, अगर ये आइसोसेलेस हो जाता है या तो इक्विलैटरल हो जाता है, हम सिंपली हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे कर सकते हैं. अदर देन दिस, अगर ये आइसोसेलेस भी नहीं है ना तो ये इक्विलैटरल है, देन क्या करेंगे? देन वी हैव आवर फेमस फॉर्मूला, दैट्स हेरॉन्स फॉर्मूला. ठीक है, उसको अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल. अब वंस वी गेट दिस हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, इट्स क्रिस्टल क्लियर कि हम बस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा. ठीक है यहाँ तक? सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, Yes, ma'am. चलो, ट्रेपेजियम ही है. यहाँ पे बस वही है जो आई टोल्ड यू. अगर ये आइसोसेलेस ना हो के इक्विलैटरल ना हो, so what we are doing, we are using this Heron's formula. Now what's this Heron's formula? This gives you the area of a triangle. And Heron's formula में formula क्या है? I'm writing it down. It's square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Now what's this s? This is the semi-perimeter. Okay. I'm drawing the figure for you. Though my drawing is very bad, इसको ignore करना. बस there are parallel sides 25 and 10. So this is going to be 10 and this is going to be 25. अब गलती से भी ऊपर कोई 25 मत लिख देना. ठीक है, थोड़ा शॉर्टर और ग्रेटर का सेंस रखना है यहाँ पे हमें. And one of the non-parallel sides are 14 and 13. Very good. One is 13, another one is 14. Okay. तो स्टार्टिंग में हमेशा वैसे ही करना है जैसा हमने हिंट्स में किया था. We are going to draw that dotted lines parallel to the other side from here. That's it. Ma'am, please wait for 5 minutes. Yeah, I'm waiting. Okay. Okay. कुछ एक मिस कर रहे हो आप लोग जिन्होंने भी आंसर्स दिए हुए हैं. You are missing out something. Madhav, you need to multiply it and give it to me. Soumya is the first one to give the correct answer. Madhav, आपने जो भी दिया है, I don't know it's correct or not. It's a figure. You please calculate it and give me the complete answer here. Very good. Yashvika, you are also correct.
प्रथम, no. Okay, Manol. Manol, now you are correct. You will not get an answer in decimals, that's for sure. Okay, those who are getting answers in decimals, so your one is wrong. No. I think I have to do this one because I'm getting a lot of wrong answers. Let's see this one because ये concept clear नहीं है. I'm doing this one. I'm doing this one for you. बेटा इसको करने से पहले you have to by heart this Heron's formula, ठीक है? Now I have drawn this dotted lines. So ये line इसके parallel है. So this is going to be 13 here. Now once I do this, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 है, ठीक है? आई एम स्प्लिटिंग दिस 25 अप. नाउ आई एम फोकस्ड अगेन. सो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? वी आर ड्रॉइंग दिस पैरेलल लाइन, ठीक है? नाउ सेकंड स्टेप क्या है? वी आर फोकसिंग ऑन दिस ट्रायंगल. सेकंड, वी आर फोकसिंग ऑन दिस ट्रायंगल. आई एम पिकिंग दिस ट्रायंगल अप. नाउ दिस ट्रायंगल इज समथिंग 13, 14 एंड दिस इज 15. ओके, नाउ इसी ट्रायंगल में जो हाइट बनेगी मेरी, दैट्स द हाइट ऑफ योर ट्रेपेजियम. अब हाइट हम कैसे निकालेंगे? दिस इज नाइदर आइसोसेलेस ट्रायंगल नॉर दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी आर फाइंडिंग द एरिया, देन वी आर फाइंडिंग द हाइट. ओके, हाउ? आई विल शो यू. अब ये ट्रायंगल है बेटा, यहाँ पे वी आर अप्लाइंग व्हाट? वी आर अप्लाइंग, अब नहीं और कैलकुलेशन मिस्टेक इज देयर. ओके, सो वी आर अप्लाइंग दिस हेरॉन्स फॉर्मूला हियर. हेरॉन्स में क्या है? सेमी पेरीमीटर निकालना है. सबसे पहले एस निकाल रहे हैं, दैट्स 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2. इसको करेंगे, सो वी आर गेटिंग 21 हियर. ओके, नाउ व्हाट्स द एरिया? अब एरिया निकालेंगे तो दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ 21 एस, ठीक है? एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए. 21 माइनस ऑल दी साइड्स एक एक करके. So 21 minus 13, 8. 21 minus 14 is 7. And 21 minus 15 is 6. अब ये स्क्वायर रूट के बाद गलती से भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है. मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फंस जाएंगे because this is a very big number. So rather than multiplying, we can You have just to break split it. this up. Yeah, we have to break this up. That's 3 into 7. Now this is 8 into 7. And again 6 is 2 into 3. Now we have the square root. Now 3 and here 3 will give you a 3 here. 1, 7, 1, 7 will give you a 7 here. And 8 and 2 is 16. Square root of 16 is 4. Now this is your area. That's 84 here. अब मैंने क्या कहा था? Once we get the area, we are going to find out the height as well. Now how we are going to do it? We all know area is equal to half base into height. So what we are going to do? हम बस इस फॉर्मूला में we are going to replace it. So it's half. अगर हम height ले रहे h, तो base क्या होगा? That's 15 here into h.
and this is going to be equal to what? This is going to be equal to 84 here. So 84 is equal to 15 upon 2 into h. So if you need, इसको कैलकुलेट नहीं करते ना, हम ऐसे ही रहने देते हैं. h क्या हो जाएगा? 84 into 2 upon 15. I'm not interested in calculating this value because we are targeting towards the area right now. Now we are supposed to find the area of trapezium. So we got this is the height of the trapezium, right? This is the height of the trapezium that we have. So now area is half into, I'm writing this height here, multiplied by sum of the parallel sides. Here we can see the sum of the parallel sides will be 10 and then 25. That will give you a 35 here. Okay, so that's it. Okay, so 2 cancel हो गया यहाँ पे, 5 7 5 3 and this will make it 28. So you are going to get 196 here. ठीक है, बहुत important question है, specifically those who are in 8, for them it's very important. ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर नहीं है तो लेंदी क्वेश्चन. yeah, it's a lengthy question but still it's very important. जो we are in 8 9th, ये कॉन्सेप्ट हमें आगे जाके भी काम में आएगा. ठीक है, हेरॉन फॉर्मूला का पूरा चैप्टर है, वी हैव दिस इन 9th, तो ये क्वेश्चन तो बहुत मस्ट है. ठीक है, बट क्लियर है ना बेटा? लेंथी है बट क्लियर है आपको? यस मैम. Just tell me yes, then I'm moving on. Okay, so let me see. I had another trapezium one. Okay, this is the one. This is very easy. इसमें कोई हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है. ओके, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. Let's do this one. What you have to do is you have to find the perimeter of the trapezium. You are provided with the area. So let's see how many can do this. I will keep it as a challenge question. I need 10 correct answers from you. This is a very easy question. कुछ ज्यादा calculation. Yes, Madhav. Madhav, do you want to ask me something? No, ma'am. You raised your hand, so that's fine. Okay. Okay, I got the correct answer. Very good, Pratham. Well done. Okay, Madhav, next. Correct. So you are on score 2 right now. Okay, बाकियों क्या कर रहे हो आप लोग? Okay, now a third answer is there from Manol. So first it was Pratham, then Madhav,
Now it's Manol. 7 more to go. So let's see. Oh my god, I got a very complicated answer, Shaurya. बेटा आपके आंसर तो बहुत ज्यादा ओके. Miss, 1 minute, I'm sending the answer. यस. अब देखो जिन्होंने भी स्क्वायर रूट वगैरह में छोड़ा है, आप टीचर को कैलकुलेट कितना काम करा रहे हो टीचर से. अब बताओ, वी हैव टू कैलकुलेट इन स्क्वायर रूट्स एज वेल. वेरी गुड. आरुष इज द नंबर 4th पे है. यू आर आल्सो करेक्ट. Okay, I am doing this one. बहुत हो गया. Only 4 people have given this answer correctly. And ये तो बहुत easy है. 10 seconds more and I am doing this thing. No, Pratham, nothing was called. Beta, your answer is correct. That's it. Okay, so let's see this thing. कैसे करेंगे भाई? Only 4 people have given. I am very disappointed. ये इतना आसान क्वेश्चन था. अभी मैं करूंगी ना, आप लोग खुद ही सोचोगे कि भाई इतना आसान क्वेश्चन था और हमने में से किसी ने करा नहीं. Miss, So- am I correct? I have just now sent the answer. Just wait a minute. I have to see. Just. No. थोड़ा सा पीछे रह गए हो आप, थोड़ा सा. ठीक है, अब देख लेते हैं ना. चलो. सो दिस इज 10 हियर बिकॉज ये 10 है तो ये 10 है. अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 204. सो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर प्रोवाइडेड विद द एरिया. अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इनटू हाइट into sum of parallel sides. अब we have this parallel sides here ना. This is 10 and this side is how much? ये पूरा side को add करेंगे तो this is coming as 24. तो यहाँ पे sum में क्या आएगा? Shashwat is correct. Very good, Shashwat. So it's like this. Okay. अब we are equating this to 204 so that we can get this h here. तो अब इसको देखते हैं क्या है बेटा. AH into 34 will be equal to 408 and h will come as yes 12 आएगा बेटा यहाँ पे. ओके, सो दिस h is 12. अब देखो ये राइट एंगल है ना, ये तो राइट एंगल है. ठीक है, अब ये राइट एंगल है तो बेटा इफ दिस इज 12 एंड दिस इज 9, हमें क्या चाहिए? वी नीड पाइथागोरस ट्रिपलेट अगेन, राइट? दिस इज 9 and this is 3. So this is the multiple of what? ये 3 था, ये 4 था. Yes, Anike, do you want to ask something? Okay, चलो. तो बेटा यहाँ पे देखो ये 3 था, ये 4 था, राइट? तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? This was 5, so this is going to be 15. अब ये कैसे कर रहे हैं? वही पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला है मेरा. That's 12 square plus 9 square will give you
this square, okay, this x square. Abhi 12 square is 144 plus 81, that's giving you 225, and ये 15 का square है, so it's 15. Similarly यहाँ पे देखो, this is also 12 है ना, क्योंकि ये तो height है, ये 12 है बेटा, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा. तो हमें सारे साइड्स मिल गए ना ट्रेपीजियम के. सो दिस इज 10 प्लस this is 24 plus 15 plus 13, that's it, and this is giving you, Avni is correct, 62. Okay, clear है ये वाला? Easy नहीं था ये? Yes, ma'am, it was easy. It was very easy. I did area of trapezium half base equal to height by mistake. Okay, now that's a problem. Area. Formulas by heart होने चाहिए, वरना हम कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे. So we are coming out of trapezium now. As we are done with all the shapes, now we are going to do some interesting questions right now. ठीक है? सारे shapes हो गए ना हमारे? Last class में rhombus, circle, square and rectangle कर लिया था. आज हमारा क्या हो गया? Trapezium हो गया. So now we are mainly focused on good questions, some good questions. So here is the one. सबसे पहले आ रहा है. Let's see. Again, this is a challenge question for you. ठीक है? I need 10 correct answers. 10 correct answers. And start करने से पहले just remember one thing. Perimeter is the length of boundary. ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट में हम फेल हो जाते हैं कि पेरीमीटर क्या है. We just write down, mug up the formula and we just write it down according to the formula. ठीक है? फॉर्मूला से भी बाहर निकल के देखना है. कॉन्सेप्चुअल है. पेरीमीटर या तो सर्कमफ्रेंस, आप जो भी बोल रहे हो, that's the length of the boundary. Okay, so let's see who are these 10 people who can do this. Okay, Manol. Yashvika, Manol, very good, both of you correct. हिंट दे दो. हिंट. सेमी सर्कल में पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल में तो 2 पाई आर होता है. सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा? Half पाई आर हो जाएगा. पाई आर प्लस इसके साथ ना एक रेडियस वाला पार्ट रहता है, बट दैट्स व्हेन योर फिगर इज लाइक दिस. जब आपका रेडियस वाला पार्ट है, देन यू आर एडिंग 2r विथ इट. अगर ये पार्ट नहीं है, सो यू आर नॉट एडिंग विथ इट. दैट्स इट. Okay, very good. I'm getting a lot of answers here. Manol, Yashvika, Soumya, Avni, 4 people. पाई की वैल्यू देखो, इट्स ऑलरेडी गिवन. प्लीज जो वैल्यू, ठीक है, श्रेयांशु वेरी क्लोज बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे आंसर्स दो. ठीक है, मेक श्योर यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर नेक्स्ट टाइम. अच्छे से सोचो.
This is a semicircle, not a circle. Shashwat, have you taken 22 upon 7 as pi? Yes, Miss. Okay, that's the problem. Can you see in the question? Okay. ठीक है. Rather than that, your answer is correct. Very good. Okay. Okay. Good going. Only 5 people, half of the people have reached this. Jashri, what value of pi have you taken? Jashri, what is the value of pi that you have taken? Okay. Please check your answer once, please. Because your answer is very close, but it's not exact. Okay. चलो भाई कर लेते हैं, बहुत हो गया. ठीक है? Ma'am, please wait. I can, but for only 30 seconds. ओके, टिक टिक 1 ऐसे करना पड़ेगा मुझे लग रहा है अब. चलो, आई एम डूइंग दिस वन. ओके, सो बस 5 people have done this and very good, very well done. अब मैं बताऊंगी ना, देखो यहाँ पे बेटा वी हैव टू फाइंड दी सर्कमफ्रेंस, जो शेडेड पोर्शन है उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है. ये हमारे जो सबसे ग्रेटर सर्कल है उसका क्या है, सेमी सर्कल का आर्क है ना. तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे तो बाउंड्री में रेडियस आ ही नहीं रहा है, ये तो बस बाउंड्री ले रहे हैं ना, हम आर्क ले रहे हैं यहाँ पे. तो दैट विल ओनली बी पाई इनटू आर. एंड व्हाट्स आर हियर, बेटा यहाँ पे देखो ये पूरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पूरा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो ये जो पूरी लाइन है ना, दैट्स 10 सेंटीमीटर. सो टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर सेमी सर्कल, द आर्क and here the radius is 5. So I am writing this as 5 pi. अब देखो बाउंड्री में क्या है, बाउंड्री में लेंथ जो होगी बेटा यहाँ पे एड ऑन होगी, राइट. हमने ये पहली वाली लेंथ ले ली, so we are going to the next length and this is the length. You can see now this is the length. अब ये क्या है, ये मेरे स्मॉलर सेमी सर्कल का आर्क है. अब ये स्मॉलर सेमी सर्कल का आर्क है बेटा, सो व्हाट्स द रेडियस हियर, हियर द रेडियस इज 3.5. सो इट्स 3.5 into पाई आर प्लस कर रहे हैं. ओके, कमिंग टू द रिमेनिंग पार्ट. अब बचा क्या हमारे पास, हमने ये जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट भी ले लिया. अब बचा क्या, बस ये वाला आर्क बचा ना हमारे पास. ओके प्रथम, correct one. Before me you have given me correct, so I am happy. So now अब ये आर्क बचा, देखो
इसमें भी देखो रेडियस कितना होगा 1.5 होगा, दैट्स पाई आर, पाई इंटू 1.5। अब बेसिकली क्या करेंगे, इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पाई को कॉमन ले रहे हैं। So this is going to be 5 plus 3.5 plus 1.5 and this is going to come as what? This is 10 into pi and pi is 3.14. उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 31.4. That's it. Okay. And the most interesting part is ये जो पहले आप मेरे को I just want to know ये क्वेश्चन इजी था या हार्ड था? Just tell me, is it hard or easy? Easy. Okay, those who are saying easy, you will be very happy to know ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है? क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, just imagine. And those who have done, congratulations. When you will go to class 10th, आप तो एकदम बहुत जल्दी कर लोगे. So we're moving on to the next one. So this is clear ना for everyone, this is clear. Conceptual है, बहुत easy है. Okay. So here comes another one. Let's see. आपको यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. Ma'am, all are rectangles. Yeah, all are rectangles. Radha, you are too late. क्या हुआ? आप अभी तो almost more than half of the class is already done. I'm sorry for joining late because I was not at home. Okay. Very good, Pratham. So the first answer comes from Pratham. Okay. Now someone is asking for hint. Hint क्या है? Hint ये है, you can take this side as B. That's it. अब जिसने भी पूछा है वो सोच रहा होगा कि ये कौन सा कैसा हिंट है भाई, बट यही हिंट है and this will only help you to reach to your answer. Madhav is correct, very good. All of these are rectangles. Shashwat, correct. Divyansh, correct, very good. So till now I have got only 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, 3 correct answers are there. Avni correct, Manol correct, very good. Going good. So इसको करने के लिए we have a trick, we have a shortcut as well and we have the normal way to do it. अब जैसे भी करो इसको आंसर सही माना है. शॉर्टकट भी है इसका, शॉर्टकट मैं लास्ट में बताऊंगी एकदम.
Okay, let's see this then. ठीक है, I have got only 4 answers correct. So how we can do this? देखो, we can take any of these side. कोई भी एक side को देखो, ये तो smaller rectangles है ना, we can take any of these side as A, B, whatever you like. Suppose I am taking, let it be, I am taking this area as A, okay? So I am taking this side, this, let it be L, length, ठीक है? हम कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा. So let me take this as L here. So basically बेटा, just wait a second. Okay, ये क्या है? ये breadth है, तो breadth का फॉर्मूला क्या होगा? That's area upon length, right? This is area upon length. बहुत अच्छे से समझना है इसको. Ending में I will tell you the shortcut method how to do this, but उससे पहले we need to understand कि ये कैसे हो रहा है. तो देखो, we have taken this side, marked side as L, so the other side is going to be area by length. Now this is again a rectangle, the area is A here, so if breadth is this one, again we are supposed to find out the length. Length का formula क्या होगा? A divided by 18 upon L, right? That's giving you AL by 18. इसको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, बस समझते हैं इस चीज को. तो ये वाली जो साइड है, I got this thing here, right? अब इसका एरिया इतना है, तो हम क्या कर रहे हैं? We are just taking one side and we are finding the other with the help of the area. That's it. So now this is the area here. So this side will be what? This is again area upon the other side. Area is 12 upon the other side. It's AL by 18. So I can write this as, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, we reached here. ये जो रेक्टेंगल है, इसमें we are having length as L, breadth as ये वाला जो हमारा बहुत गंदा सा निकला है ये. So but इसमें एरिया भी तो गिवन है हमारे पास. So what we can do, we can simply multiply length here and breadth here. So breadth क्या था? ये वाला जो इस पार्ट है, and length तो simply L है, and that's equal to 54. That's it. So यहाँ से what we will do, we are going to cancel this out. L cancel हो गया, and it's simply 12 into 18 upon, sorry, this is 54, and that's equal to A here. So once you cancel this, you are getting 4 units. Okay. अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली ये ओलंपियाड वगैरह में आता है, NTSC JSTC में. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू, याद रखेंगे कभी भी एक रेक्टेंगल को, sorry, if we are splitting this rectangle into 4 halves, okay, 4 halves, कोई भी मेजरमेंट का अगर हम परपेंडिकुलर लाइन से 4 हाफ में इसको स्प्लिट करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे A, B, C, D 3 पार्ट्स हो गए. Area of A and multiplied by area of C is always equal to area of B multiplied by D. This is the shortcut to do this. ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, because we are not going into this working part, we are just interested in how to find out the answer. अब यही फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे इनिशियली लगा दिया होता, ठीक है, सो क्या आता यहाँ पे? इट्स 54, राइट? 54 मल्टीप्लाइड बाई A, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 18. तो बहुत आसानी से A आ जाता हमारा 4 है. ठीक है, क्लियर है बेटा? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, very good. So you have to note this down. ठीक है, ये जो formula we have written, this is very useful, so we can proceed further. Okay, let's see. I'm going down. Okay, this one we have done. Okay. Yeah. This is once again a very easy one.
Sorry, ma'am, it was by mistake. Okay, beta, it's okay. Very good. First correct answer by Madhav, Manol, and Pratham. Okay. Ma'am, the side is 6 centimeter. Yes, yes, yes. Okay. Again, we have to find out perimeter. Perimeter में बहुत important है. I told you you have to look out for the boundary. ठीक है? By mistaken way, you cannot take the sides that are not included in your boundary. यही मिस्टेक बहुत करते हैं हम कि जो साइड्स इंक्लूड भी नहीं है हमारे बाउंड्री में, वी आर टेकिंग दैट साइड्स एंड आवर आंसर इज कमिंग रॉन्ग. Okay, so I got maximum of your answers and most of you are correct. So now this side is 6. Okay, ये 6 है बेटा, and ये जो दूसरे स्क्वायर्स है ये मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है. अब ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 3 हियर. नाउ दिस पार्ट इज इंक्लूडेड. ठीक है, यहाँ से ये पार्ट इंक्लूड हो रहा है ऐसे करके. दिस इज 3 हियर, दिस इज 3 हियर, दिस पार्ट इज 3 हियर, this part is also 3, this is 3, and this is, sorry, just wait a second, I have skipped out the next half part. Yeah, बेटा ये भी 3 है. अब यहाँ पे देखो अगेन ये हाफ से ज्वाइन हो रहा है, ये पूरा 3 था, तो this is going to be what? This is going to be 1.5. now this 3 sides, they are also going to be 1.5. so we can calculate कि हमारे पास 1.5 कितने हैं? 1 side, 2 side, 3 side and 4 sides. 1.5 will give you a 6 here. Now we can see how many 3's are there. 1, 2, 3 3's are there. That means it's a 27. Okay. Just wait a second. क्या हो गया यहाँ पे? एक minute. Just give me a moment. हाँ जी. एक मिनट. एक सेकेंड. हाँ. Just wait a minute. Okay. Okay. So हम कहाँ पे थे बेटा? यहाँ पे we are having 1 6 2 6 and 3 6. 3 6 हो गए, मतलब कितने हो गए हमारे पास? 18 हो गए. यहाँ पे we are having 1 3 1 3. That's a 6 here, and यहाँ पे एक और 3, that's a 9 here. Okay. तो हमने बचा कितना हमारे पास? 6 बचा.
इसको add on करेंगे, so we are getting a 33 here. Okay, clear है बेटा? Is this clear to everyone or shall I repeat? Hello. Okay, very good. So moving on to the next one here. Okay, just give me a moment. Yes, this one. Chalo. Can you zoom in? Yes, I am doing it. Wait a second. I'm increasing the font size. Okay. Again, यहाँ पे दो parts है, ठीक है? We have to find the area as well as the length. Please make sure you are giving both the answers together. Okay, please make it a bit fast, ठीक है? Easy है यहाँ पे बेटा. Area निकालना है. Very good, Manol. Yashvika, correct. Okay. Those who are getting wrong answers, I think you have done some mistake in half, multiplying or dividing half. Please do check there. Okay, इसमें simple. We are going to apply the formula. Avni, your height is correct. Simple formula for, what's the formula for area of a triangle? That's half into base into height. Okay, है ना? तो यहाँ पे when we have to find the area of ABC. Now ABC एक obtuse angle triangle है बेटा, यहाँ पे है ना? So we cannot take BD here because BD का length हमें पता ही नहीं है. So what else we can take? We can take the height that's outside, that's 15. So half into 15. अभी जो height 15 है बेटा, ये कौन से base के ऊपर है? That's on 7 centimeter. So it's 15 into 7, half into 15 into 7, that's giving you 52.5. Coming back to the triangle,
देखो यहाँ पे अगेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला कि हाफ बेस इनटू हाइट अगर हम यूज कर रहे हैं, बट दिस टाइम द बेस इज 25 and the height is BD. Okay, and this area is always equal to the previous area that we have already got here. So BD is equal to 105 upon 25. That will give you 121 upon 5, that's 4.2. Okay. Yes, Pratham, now you are correct. Okay, this was a very easy one. इसमें वैसे कुछ था नहीं, simple formula based था. Okay, I'm moving on to the next one. Okay. Okay, ये तो बहुत आसान है. This is only for concept clearing. कि if we have a parallelogram and a triangle drawn on the base, so area of parallelogram is 24. So area of the shaded region you have to find here. Let's see. इसका आंसर 10 seconds में आ जाना चाहिए. Very good. Fastest finger first चलना चाहिए. This is very easy. प्रथम, मनोल, only 2. मैंने कहा 10 seconds, 10 seconds में आंसर आने चाहिए फटाफट से. इसमें कुछ नहीं है. This is only for concept. कितना क्लियर है हमारा? Because इसके next we are going to do the main question. Yes. Okay. Now Avni is also correct. Very good. Okay. Shraddha. Okay, what's taking so much of time? We have a basic, very basic concept that when we have this parallelogram, just give me a moment. When you have this parallelogram and we are making a triangle on the base of this parallelogram, ठीक है, between the parallel lines. अब इस triangle का area जो है, that's half into the area of parallelogram, ठीक है. ये जो shaded portion में है, that's half the area of parallelogram. तो बेटा अगर 12 है, this is half, तो रिमेनिंग पोर्शन में भी तो हाफ ही होगा ना. सो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है बेटा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 12. दैट्स सो इजी. ठीक है, ये तो बस कॉन्सेप्ट के लिए था. मेन क्वेश्चन तो अब आ रहा है. ओके, so let's give a try to this one, and this is going to be a challenge question. ठीक है, class versus teacher. Let's see. I need how many? Okay, I need 10 correct answers from you. Ma'am, what is 20? All this are areas. Okay, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 is the area, 20 is the area, 2 is the area, all these are areas, and you are supposed to find out the area of this one shaded portion.
Okay, till now I have only one correct answer. That's from Manol. Initially मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसके लिए. Okay, just give me a moment. Okay. What you can do is you can mark the area of these parts as A, B, C, D, E, F and G. ठीक है, यहाँ से you can start doing this. This is a very good question. What's happening? People are logging out और ऐसे ही log out हो रहे हैं. Okay, I am doing this one for you. I don't think कि आप लोग ये challenge यहाँ से हो पाएगा. So because this is a tricky one but बहुत easy है. तो देख लेंगे कैसे करना है. अभी हमने जो concept किया है and this is a rectangle. भले ये rectangle की तरह भले ये दिख नहीं रहा है, but this is a rectangle and rectangle एक क्या होता है? Parallelogram होता है. हमें सबको पता है. And we know that parallelogram में के base में we are drawing a triangle like this. ठीक है, if I am talking about DGM, बहुत ध्यान से देखना. DGM का एरिया क्या होगा? Half the area of ABGD, right? I am taking the other triangle ADN. Okay, I am taking ADN. This is also half ABGD, right? अगर मैं इन दोनों को एड ऑन करूं, ठीक है, मैं क्या कर रही हूं? आई एम एडिंग ऑन द एरिया ऑफ ADN एंड DGM टुगेदर. सो दिस इज गिविंग यू द एरिया ऑफ द एंटायर रेक्टेंगल. यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहां तक क्लियर है? मैंने वी हैव यूज्ड द concept of area of parallelogram and triangle. So this one is the first triangle that we have taken and this is the second triangle that we have taken. जो हमारे पास visible triangles है base के ऊपर. There are only two triangles on the base and between the other line, right? Parallel lines के बीच देखो they are forming only two triangles. तो मैंने उन्हीं दो triangle को pick up किया है, इनके एरियाज को लिया है, दैट्स हाफ. तो इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये रेक्टेंगल के पूरे एरिया के साथ इक्विवेलेंट होगा. अब एडीएन पे आते हैं. एडीएन का एरिया क्या होगा? आई हैव मार्क्ड आउट दी स्पेसेस. सो एडीएन का एरिया क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस एफ, राइट? ए प्लस बी प्लस एफ, ये एडीएन का एरिया है. प्लस डीजीएम का एरिया क्या होगा? बी सी डी, राइट? B plus C plus D. Okay. अब this is equal to the area of rectangle here. अब rectangle को देखो ये छोटे छोटे pieces में कट किया गया है ना. तो देखो मैं अगर okay, I have missed out of one part, I guess, right? This part A B C D. Yes, Pratham, you are correct. A B C D E F G. I missed out this part. This is going to be H here. Okay. So rectangle को अब हम फोकस करते हैं. रेक्टेंगल को अगर हम ये segmented parts को join करें, we are going to get the area of rectangle. So that's A
plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H. Means we are going to get A plus B plus C like this. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है ना? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है बेटा. व्हाट वी आर डूइंग, टेकिंग दिस ऑन बोथ द साइड्स एंड वी आर एडिंग. अब देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी. ए बी बी एफ कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया बेटा, डी कैंसिल हो गया. अब बचे क्या हमारे पास? B इज इक्वल टू E प्लस एफ प्लस एच. अब E प्लस G प्लस H के वैल्यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा. E is 20, G is 2 and H is 3. So it's 20 plus 3 plus 2. That's 25. Okay. Now tell me, ये hard है नहीं, but yes, conceptual है. थोड़ा सा we have to use our and exercise out our brain to find the answer here. Clear है बेटा सबको? I need a thumbs up from everyone to proceed to the next question. Please tell me if it's a yes or no. Hello, can you hear me? Okay. Yes. Why people are logging out, I don't understand. There are so less participants. Okay. Okay, so I'm moving on to the next one, dear. Okay, here is the next. So यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ना क्या क्या दिया हुआ है. Sum of three lengths of three sides of a right angle. Right angle तो पता ही नहीं हमारे पास क्या है, तो ऐसे ही कोई भी right angle ले लेते हैं ना. इसमें three sides, let it be A, B and C, assume कर लेते हैं. Okay, then three sides का जो sum है that's equal to A plus B plus C and that's equal to what? That's equal to 25. Okay, so we can proceed further then. ये तो मैंने स्टार्ट कर दिया. अब बाकी लोग यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. हेलो हेलो, किसी का भी नहीं आया अभी तक आंसर? Okay. Okay, calculating. So I'm waiting for you. I am giving another one small hint here. Basically, what happens? Sum of the squares of the length of the three sides is A square plus B square plus C square, and that's equal to 200. But we also do know A square plus B square is equal to C square. See, I have already done 3 lines for you. Now it will be much more easier.
Okay, we need some concept of algebra here in this one. Okay. And now as Ma'am, you, a plus b plus c whole square. yes, very good. You can apply that one. So how do we do this one? As we are not left with much time, I'm doing this, okay? So how to take this? See, we know that a square plus b square is equal to c square. We can put this value in the upper equation. So we are getting this as c square plus c square, and that's equal to 200. That's 2c square is equal to 200. Okay. So from here we are getting c square is 100. So c कितना आ गया हमारा? 10 आ गया. We already reached टू 1 पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गया. ABC में ना एक पॉइंट हमें मिल गया. अगर C10 है तो यहां से what we can do is from 1 what we can do, we can put the value of C here. So A plus B will be how much? 15 here, right? And अभी हमने क्या सुना कि we can use the formula of A square plus B square. So क्या करेंगे हम? We are squaring these both sides, so it's a square plus b square plus 2ab, and that's equal to 225. Okay. अब यहाँ पे a square plus b square कहाँ कैसे मिलेगा? We already got this here. ठीक है, ये c square की इक्वल था, and that was what? That was 100. ठीक है, and that's equal to 225. So twice of ab is equal to 115. No, sorry, 1 second. Calculation mistake from my side. So इसको subtract करेंगे, so wait a second. हाँ जी, subtract करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, right? So A into B is going to be 125 upon 2. But इससे क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? We are going to find the area. Why and how? Area of this triangle is half into A into B, क्योंकि AB तो हमारी बेस और हाइट थी ना, राइट? सो क्या करेंगे हम इसके साथ? We are multiplying half to both the sides. Okay? So that's how we are going to get this one. तो कितना आ गया? आप इसको कैलकुलेट करो. दिस विल कम 125 upon 4, 31 point something, 31.25. या ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है बेसिकली? Ma'am, it will be something like 30. Ma'am, it will be 31.25 only. Yes, ma'am. 31.25. Yes. Yes. Voice was cracking, so I was not able to. But ये participants अपने आप ही log out हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है? चलो. So we can. Now this is 31.25. Excuse me, So ma'am. let's end this here. We have done a lot of good questions. Hanji? Hanji? Ma'am, we can do I it was asking something. by Pythagoras also, no? Your voice is cracking. Can you type this on in your chat box and I will reply there. We are ending today because it's almost time. आप अपना Ma'am, डाउट we जो could- क्या है बेटा आप एक बार तो I think there is some internet issues. Your voice is cracking over there. Ma'am, we can solve this question Yes, we by can do this Pythagorean triplets also. Pythagoras. Yeah, we can do this by Pythagorean triplet as well. Yes, you are correct. We can do this by Pythagoras triplet as well. So how can we do this? Can you help me? So हमने तो यहाँ पे कितना ले लिया था Ma'am, बेटा? We one have got side this can C be as 10 and the other two sides will be 8 and 6.
Very good, very good. How we are getting this 8 and 6? अब ये बता देंगे, यही पे प्रॉब्लम है. मैम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स प्रॉब्लम क्या है? 25 नहीं हो रहा. so 10 8 and 6 will come. प्रॉब्लम ये है बेटा. Okay, I will tell you what's the problem here. See, when you are getting 10, you cannot tell that ये जो sides है ये 8 और 6 ही होंगे. Why you cannot tell this? Because बेटा आपके पास एक साइड प्रोवाइडेड होना चाहिए. हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो a plus b 15 एड अप करके हो रहा है. बट इफ यू टेक दिस एज 8 and 6, व्हेन यू एड दिस अप, ये ना 14 बन रहा है, 15 तो बन ही नहीं रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes मैम. तो यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं. यहाँ पे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं ना कि हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज तो कर सकते हैं बट एक प्रोवाइडेड साइड से नहीं कर सकते. वी नीड 2 साइड्स फॉर दैट. वी नीड 2 साइड्स. सो आपने जब ये 10 दिया तो 10 के साथ कोई भी एक और साइड प्रोवाइडेड होता तो आप आराम से बोल सकते थे कि दिस कैन बी 8 और दिस कैन बी 6. इवन इफ यू आर टेकिंग 8 and 6, this is not satisfying this equation. So our assumption is wrong and we cannot use these values. So ये जो height and base होगा ना, this will come something in points and decimals. Okay? ठीक है? समझ गए ना हम यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं? हाँ? मैम. Okay then. So we are going to end this here only. ठीक है? चलो. So for today, the class is over and perimeter and area के almost सारे ही questions हो गए. ठीक है? चलो then. Okay. Good night to everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.